So let's raise the big question. Was there a threat assessment done before the security downgrade of the singer politician? Is the Aam Aadmi Party guilty of playing political populism over security of VVIPs? Is the AAP government out of its depth in Punjab, or is Punjab simply trapped in gang wars that are existing on the ground? Was Sidhu Moose Wala part of these gangs? Let's look at the big question. Joining us now on the show at the moment, I'm joined by, from the Aam Aadmi Party, joining me now is Mr. Grewal. I'm joined by Jangveer Singh, spokesperson, Shiromani Akali Dal, Adil Singh Boparai, Congress spokesperson, Abad Singh Grewal, Aam Aadmi Party spokesperson. Also joining me is former Punjab DGP Shashikant. Appreciate your joining us. But first, I want to go to Daler Mehendi, because Daler Mehendi was seen as a symbol, an iconic symbol of the entire wide industry of Punjabi music and singers, which has captured the imagination across the world. But दलेर भाई, आप बताइए, जब आपने सुना कि सिद्धू मूसेवाला को इस तरह से मारा गया है, क्या आपको भी लगा कि कहीं गैंग वॉर इसमें इन्वॉल्व है? क्या लगा आपको पहले? नहीं, मुझे जो लगा कि जो मैंने उनका वीडियो सब मेरे पास जो आए, जो मैंने जो वीडियो देखे, और उसमें मुझे बहुत हैरानी हुई कि आपको मेरी आवाज आ रही सर? हाँ, बिल्कुल आ रही है दसाई सर। मैंने आप जी, तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि जिस तरह वो अकेले एक थार में निकले हैं, और बहुत सिंपल सी थार में वो निकले, उनके साथ कह रहे थे कि 2 लोग और थे। वो मुझे बहुत सुन के हैरानी, क्योंकि पंजाब में एक ऐसा कल्चर बन गया है कि जो भी सिंगर है वो उसके से कुछ आता है या नहीं आता है, वो कुछ है या नहीं है, उसके साथ 5-10 बाउंसर वो अपनी सिक्योरिटी के लेके चलता है हरदम साथ में, और कम से कम 2-3 गाड़ियां चलती हैं हर सिंगर के साथ। पर ये मैं बहुत हैरान हूं कि ये एकदम घर से जब निकले हैं तो अकेले निकले हुए हैं, और वो मैं देख के बड़ा मुझे दुख हुआ। दूसरा, पहली बात तो ये है कि कोई भी हो, चाहे सिद्धू मूसेवाला जी हो, कोई आम आदमी बिल्कुल सड़क चलता भी हो जिसको कोई नहीं जानता, इस तरह वारदात करनी बहुत ही दुखदाई है। और मैंने कभी उनका कोई गाना सुना नहीं है, नाम सुना था क्योंकि बहुत मशहूर है, लेकिन कभी उनका गाना नहीं सुना, कोई लिरिक्स नहीं मैंने सुने, तो मैं ज्यादा नहीं कह सकता हूं क्या है। पर देख के, न्यूज सुन के बहुत दुख हुआ कि इतना बड़ा नाम और एकदम इस तरह ट्रीटमेंट की गई। आप जब पंजाब जाते हैं, आप कितने सिक्योरिटी गार्ड्स आपके साथ रहते हैं? अब मैं मतलब ये कि मैं क्या बताऊं कि मुझे बहुत हैरानी आती है, और अपने आप पे बहुत हंसी भी आती होती कि मैं और कभी फैमिली के साथ ऐसी अकेले निकल जाता हूं। और मेरी तो आदत है कि मैं किसी बाजार में घुस जाता हूं, कहीं पटियाला गया तो कभी जग्गी स्वीट में चला गया, कभी किसी के पास खाने चला गया, तो कोई बिंदास, कभी सिक्योरिटी वगैरह मैं नहीं रखता हूं। लेकिन ये है कि आपको कभी पंजाब में जो मैंने कल्चर देखा है कि बहुत, आपको कभी एक्सटॉर्शन थ्रेट्स मिले हैं? मुझे कभी ऐसा हुआ। एक मेरे साथ एक बार बहुत बड़ी थी 2000 में, जब अबू सालिम ने हमारे ऊपर मेरे ऑफिस में हमला किया था, और बोल के किया था कि इतने बजे हम आपके ऑफिस में आएंगे और गोलियां मारेंगे। तो मुझे विश्वास नहीं था कि ये अबू सालिम है। जब उन्होंने गोलियां चलाई, फिर उनका फोन आया कि हमारे आदमी ने आपके ऑफिस में गोलियां चलाई, अब आपको यकीन हो गया मैं अबू सालिम हूं? तो मैंने कहा जी बिल्कुल यकीन हो गया। और थोड़ी देर में पुलिस आई, पुलिस ने मुझे बताया कि ये अबू सालिम के लोग थे। और फिर 1 साल मेरे साथ 12 गनमैन रहे हैं, 7 दिल्ली पुलिस वाले, 4 पंजाब पुलिस वाले, और फिर हरदम घर के अंदर 17 लोगों की टीम रहती थी राजस्थान पुलिस की। तो 1 साल वो जो गुजरा मेरा, और उसके बाद जब सिक्योरिटी वगैरह हट गई तो कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। आपने कभी ये पंजाब के गैंग वॉर्स के बारे में सुना था? ये जो गैंग्स जो कह रहे हैं कि हमने सिद्धू मूसेवाला को मारा है, आपने ये गोल्डी और ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में सुना था? जी, मैंने कभी ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुने हैं। और हमारा एक्चुअली म्यूजिक का काम है, और मेरे तो जितने आपको पता है गाने सिर्फ सोल को झुमाना, 2-2 साल के बच्चों को नचाना, वर्डिंग ऐसी यूज करनी जिससे
आपको मोटिवेशन मिले और आप फैमिली के साथ बैठ के गाने को सुन सके। अब रात को मेरा शो था आगरा में, 50,000 लोग थे हुनर हाट के अंदर, और 2 घंटे शो हुआ, खूब लोग नाचे। और जब मैं शो करके नीचे उतरा तब मुझे बुरी खबर मिली, पर मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। और मैं ये कहना चाहता हूं कि पंजाब सरकार, केंद्र सरकार, पूरे इंडिया के अंदर जितनी भी लैंग्वेज हैं उनके ऊपर ध्यान दें कि जो गाने हैं वो किस तरह के चल रहे हैं। अगर नशे के ऊपर गाने चल रहे हैं, गैंग के ऊपर गाने चल रहे हैं, गन्स के ऊपर गाने चल रहे हैं, या गलत वर्ड यूज किए जा रहे हैं वुमेन के लिए, ऐसे गानों को पहले सिंगरों को वार्निंग दी जाए कि रोका जाए, तो ये बहुत कुछ चीजें कंट्रोल में हो सकती हैं। दलेर मेहंदी जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। दलेर मेहंदी, who remember is the iconic singer who started this revolution in Punjabi music. Let's turn to my panel, Mr. Grewal of the Aam Aadmi Party. Let's turn to the Aam Aadmi Party first, because the Aam Aadmi Party has the most to answer in this case. Do you concede now that this entire episode has pushed you, Mr. Grewal, on the back foot? Your government is barely 70 days old, and once again questions are being raised. Can the Aam Aadmi Party handle security in a sensitive state like Punjab? You're on mute. You're on mute, sir. You're on mute. First of all, this is tragic. This is tragic, and this was totally avoidable. We accept responsibility. We accept there have been lapses, and those lapses will be surely, for sure, they will be discovered, and people responsible will be held to account. No, lapses on whose part? Are you blaming your police leadership, or does the political leadership? Sir, because the decision of withdrawing VIP security for so many people does not only come through the police, it also comes because that's the direction the political leadership gives the police. Remove VIP security. Okay. No, sir. First of all, security was not removed. This gentleman had security. Very unfortunately, that will also be investigated. He went without security. Our point, his Mr. security was downgraded, sir. Please be clear. Yes, his security was downgraded. Yes, sir. It was downgraded, but even the downgraded security he did not take along. If had there been security with him, there would have been an encounter. The thing is that there was nobody with the ability to fire back. He did not take, which is, look, I am not contesting anything. All I am saying is that this episode exposes the intelligence, and in important cases even by the intelligence wing. Whenever the decision is to be taken to reduce or enhance or curtail or whatever, it has to be strictly and objectively on the basis of whatever is contained in those files. Okay, so what you're saying is you need an objective security assessment of each individual. It cannot be reduced to a political football or political populism. No way. I also have a senior police officer who's just sent me a message on WhatsApp saying, remember, many of these guys have narco contacts. That is why they are getting caught and killed in what he's calling inter-gang rivalry. Either way, all of this is an embarrassment for the Punjab government. The Punjab government in particular today is clearly on the back foot, and the only way it can resolve it is by acting. The fact is now, talk comes cheap when you win an election. Once you're in power, Mr. Grewal, no, yes, you want to make a final point, Shashikanji? Yeah, I just wanted to say one thing. When we talk about all these things, remember that the entire planning was done from a prison house, that is Tihar jail in Delhi. And jails are the best places, unfortunately, to plan and to ensure its meticulous implementation. And that in a sense reveals another dark secret, that a gangster sitting in Tihar jail can in a way organize all these killings that have been taking place. Our actions will speak. Okay, so your actions will speak, which is why we will wait and we will put you on test. Now you're not in the opposition, you are in the government.